ओके, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का चैप्टर है, यूनिट 4 हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं वो भी हम इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। ठीक है, सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं हम। इट इज द प्रोसेस, हाँ, डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, इसका आंसर लिखवा रहा हूं। इट इज द प्रोसेस in which the business converts the inputs which are the factors of production, which are the factors of production into outputs as the raw material is processed, as the raw material is processed and converted into semi-finished and finished goods ठीक है। सिंपल, जब आप रॉ मटेरियल को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, किसी सेमी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर या फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा सवाल या क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो, ये नई चीज है जो पहले नहीं थी। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्शन। हाँ, ये लिखो, डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्शन। Define the term sustainable production. It is क्वेश्चन नंबर 6। लाइन से निकाला, पहले 1 करवाया और अब 6 था। अब 2 मार्क्स। It is the production process in which जी, it is the production process in which the business ensures that lesser resources are being used to produce output also the focus is to protect the environment and be efficient ठीक है, ये हो गया। चलो एक और सवाल देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, ये वाला सवाल देखते हैं। Analyze one link between the levels of productivity and the unit cost. अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 for 5 marks. Analyze one link between levels of productivity and unit cost. सही, हमने पढ़ा भी था, इकोनॉमी ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये इकोनॉमी ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज वन लिंक बिटवीन लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड यूनिट कॉस्ट। देखो, कोई बात नहीं,
तो आगे लिखते हैं। अब देखो ये 5 मार्क का सवाल है जिसमें 2 मार्क और 3 मार्क दोनों इनकॉर्पोरेट होंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक डेफिनेशन पे बात करेंगे और फिर लिंक को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्टिविटी एज how well we are utilizing productivity as how well we are utilizing our resources while the unit cost is the cash outflow the business incurs for producing a particular good हाँ यानी इसको बेयर करना पड़ती है, ठीक है। द लिंक बिटवीन productivity and unit cost is as the productivity increases the business is able to produce more output with lesser resources therefore when less resources are being used the cost of producing a particular unit declines. The cost of producing a particular unit declines, therefore reducing the average cost. As in the case, if the productivity is less, and the workers are taking more time to produce output, therefore they may charge higher wages resulting in a higher average cost.
ठीक है, चलो एक और आंसर लिखते हैं, फिर इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को रोकेंगे हम। अच्छा, ना ना ना, वन लाइनर टू लाइनर बस, ज्यादा नहीं, डिटेल डेप्थ में डेफिनेशंस नहीं जाएंगी। हाँ, अच्छा अच्छा, इस तरह का सवाल आएगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन या चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, चलो ये छोटा आंसर लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सप्लेन वन रिसोर्स that will be needed by a farmer to produce wheat. Explain wheat गंदम, explain one resource that will be needed by a farmer to produce wheat. ठीक है, सिंपल, खाली वन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो आप लैंड की बात भी कर सकते हो, लेबर की बात भी कर सकते हो, कैपिटल की बात भी कर सकते हो। तो लिखते हैं द फार्मर, द फार्मर will need labor the farmer will need labor to work on the farms, to work on the farms to produce wheat such as for driving the tractors, for driving the tractors and harvesting the crop, and harvesting the crop, बस। क्योंकि क्योंकि गेम ये है कि अभी थोड़ा शॉर्ट इसके लिए नजर आ रहा है क्योंकि बात ऐसी हो रही है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रोकते हैं। हाँ बस डायरेक्ट, हाँ हाँ, ऐसा ही ऐसा ही।